काफ़ी वक्त में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें आप सिर्फ फैमिली मूवी ही नहीं कह सकते हैं। उनमें मोटिवेशन भी होती है, उनमें सोशल मैसेज भी होता है, उनमें ज़िंदगी का जज्बा भी होता है। कुल मिलाकर के वो फिल्में एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते की तरह होती हैं जो अपने साथ कई ऐसे रंग लेकर आती हैं जो आपको हाल फिलहाल में सिनेमा में दिखती नहीं हैं। साफ सुथरी फिल्में, ये आज की डेट में हम कह सकते हैं कि कुछ एक रेयर फिनोमेना बनता जा रहा है। लेकिन ऐसी फिल्में जब आती हैं तो लोगों की पहुंच उन तक कितनी हो पाती है। एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत फिल्म जो आने वाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चिड़ियाखाना। ये फिल्म एक बहुत गहरा संदेश लेकर के आ रही है जो आप तक पहुंचा रही हैं और इसमें दिख रहे हैं वो लोग हमारे साथ हैं इस वक्त बहुत खास। मनीष तिवारी निर्देशक इस फिल्म के हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर हैविंग अस। थैंक यू। प्रशांत नारायणन, जिन्हें आपने कई खौफनाक किरदारों में देखा है, लेकिन मुझे हाल ही में इन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसी प्यारी फिल्में और भी की हैं, तो वो हम आपसे जानेंगे प्रशांत। बट थैंक्स फॉर बीइंग हियर। या सो वेलकम। और मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को ये इंटरव्यू अभी बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं रीमा ने हमारी फिल्म के बारे में कि अभी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे और मनीष को तुरंत यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा हम लोग खुद नहीं बोल सकते हैं। तो मनीष, सबसे पहले चिड़ियाखाना स्पोर्ट्स में या बच्चे जो करना चाहते हैं भारत में, इसे लेकर बहुत सारी फिल्में बनी हैं कि उन्हें दरअसल वो ग्राउंड नहीं मिल रहा। लेकिन जिस खूबसूरती और सेंसिटिविटी के साथ आप ये फिल्म लाए हैं, जो ट्रेलर में दिखा है, वो वाकई में अपने आप में मुझे लगता है लीक से हट करके है। और हम आपको ये बता दें कि ये टैगलाइन है इस फिल्म की, देयर इज अ टाइगर इन एवरी अंडरडॉग। ये फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म क्या लेकर के आ रही है, क्या संदेश दे रही है ये फिल्म। तो मनीष, कैसे हम ये जो टैगलाइन है इस फिल्म की वो हम फिल्म में देखने जा रहे हैं और आइडिया कहाँ से आया? चिड़ियाखाना में आप फुटबॉल ज़रूर देखेंगे, लेकिन उसका थीम उससे डीपर है। ये एक अंडरडॉग की कहानी है, एक आउटसाइडर की कहानी है और एक वल्नरेबल आउटसाइडर की कहानी है, जो कि बिहार से एक लड़का है जो सिंगल मदर के साथ एक मुंबई के मराठी चौल में आकर के रहता है। उनके मीन्स बहुत कम हैं और हम देखते हैं कि कैसे एक सिंगल पैशन जो उसका है फुटबॉल, उस पर फोकस करके ही फाइंड्स अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज मदर इन दैट सोसाइटी। सो tagline वहीं से आता है, there's a tiger in every dog, because if you have a passion and if you're struggling for it, and through sports, which is a very visible and proved medium to shape characters, so you are able to prevail upon these situations. और word tiger is both symbolic, but मेरे फिल्म में slightly literal है, because जब इसको डर लगता है तो जानवर देखता है और एक fearful character, एक vulnerable character है, and in a coming of age story में he is also trying to discover कि इस चिड़ियाखाना में मैं कौन हूँ, मैं कौन सा जानवर हूँ। Finding his identity. Journey, it's a coming of age story. So we come to a point where he prevails, I think, and but it's something that everyone is going to identify with, because we all in certain situations are underdogs, and if we put our minds and grit to it, we prevail and Survive. Yes. So, प्रशांत नारायणन हमारे साथ हैं। प्रशांत, आपने कई तरह के किरदार किए हैं, बहुत लंबी आपकी जर्नी रही है। सिनेमा में हम बात करें, अक्रॉस लैंग्वेजेस आपने काम किया है। इस फिल्म में सबसे ख़ास बात क्या थी? बहुत आपका एक अहम किरदार है, और क्योंकि ये फिल्म स्पोर्ट्स की बात करती है, आप खुद स्टेट बैडमिंटन चैम्पियन रह चुके हैं दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में। अगर हम आपको बता दें, किस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते भी आपने कैसे रिलेट किया, और आपका जो इसमें किरदार है? See, because मैं बचपन से I've been a sports person. मैंने क्रिकेट भी खेला है, मैंने फुटबॉल भी खेला है, बैडमिंटन खेला है, so I think I think as a human being I have something which is ingrained within me, which is true sportsmanship. I have always been with people whom I have believed in, and so I am just there for people. And it's not one or two occasions, it's always been the case with me. So this is exactly the kind of role that
Pratap Talpade, who's the character in this film, he also believes in those kind of things. He used to play football, and then he's quitted and all. Now he's become a political gunda and all that. But you cannot change a person's personality just because he's changed his, the soul within. So the whole motivation behind me doing this particular part was that, you know, here I am playing something where I'm like a catalyst in this whole film. It's because of this character that, you know, these people get that kind of motivation to fight against a very superior school, and in the process how they save their own ground, which was going to be taken over by the builders, and how he not just trains these people but also instills a lot of confidence and instills them all these survival instincts about how to, you know, go about, you know, becoming better human beings. So it is not just a simple one layered kind of a role. So it has got lots of layers, and it's a very deep film. It's not a simple film just like that. So it's a deep film, handling such a deep film and with such a star cast. We have Prashant, we have Ravi Kishan, we have Anjan Srivastava, we have Govind Namdev. इतने सारी यू नो काइंड ऑफ बेस्ट ऑफ स्टार कास्ट के साथ आप एक मैसेज दे रहे हैं जो मैसेज अपने आप में बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, लेकिन उस मैसेज को आपने उन तमाम रंगों के साथ दिखाना है कि लोगों को जो ज़िंदगी की अहमियत है और गहराई है वो और ज़्यादा खूबसूरती के साथ पता चले, ताकि ये फिल्म आपकी लीक से हट कर लगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे फिल्में नहीं बनी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको इस पूरी स्टार कास्ट के को स्पेस देते हुए हर किसी को उसको दिखाना है. हाउ बिग द चैलेंज वॉज एंड हाउ यू हैव टेकन इट अप? I think the challenge was perhaps casting the younger set of actors, जिनको मैं जानता नहीं था. तो उसमें ऋत्विक साहुरे आए हैं, जो is a well known actor today, and अवनीत कौर, जो उनकी इंटरेस्ट है. Then there's जयेश करदक. तो you young footballers हैं. It took me some time to cast them, seeing their previous work, or there's a huge audition process. And the big challenge was to finding actors first and then hoping that they will learn to play football. So a long workshop. और जहाँ तक पुराने मेरे संबंध थे उनसे, मेरी एक फिल्म थी आजतक जिसमें 3 एक्टर्स जो आप इस फिल्म में देखेंगे, प्रशांत नारायणन, राजेश्वरी सचदेव, रवि किशन, इनके साथ मैंने आजतक में काम किया हुआ था. बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब माय पर्सनल फेवरेट्स ईच ऑफ देम. Yes. And then Anjan ji and Govind Namdev and Nagesh Bhosle ji fell in place. So it's not a very tough job when you have just the right actors cast for their part who are very serious about their roles. You just go day by day. I am doing exactly. लेकिन मनीष, आपको लगता है जिस ऑनेस्टी के साथ ऐसी खूबसूरत और बहुत अच्छी कहानियाँ बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो ऑडियंस तक भी पहुँचे, वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उस बीच में एक चैलेंज आ जाता है जो बढ़ते दौर के साथ बड़ा हो गया. Yeah, which is marketing and branding of a film, and that's why we are out and about. But what I'm noticing is that that's a challenge even for bigger films. And what I'm hoping is there's a huge hue and cry and call for quality content-driven films. So we are out here today to say that Chidiakhana is that very film, and it was meant to come in theaters. So please come out in theaters and see it. You won't be disappointed. Foremost, it's an entertaining film, and of course there are many subjects, characters उसमें आपको मिलेंगे. प्रशांत, आपको लोगों ने ज़्यादातर, मतलब जो कैरेक्टर्स आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने याद रखे हैं, वो एक विलन के तौर पे, एक बहुत ही कह सकते हैं ऐसे खूंखार अभिनेता के तौर पे लोगों ने देखा है. ऐसी फिल्मों में जब आप आते हैं, एक कैरेक्टर शिफ्ट तो ही होता ही है, मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ ही होता है, लेकिन फिर आप बतौर अभिनेता कैसे कैरेक्टर को खुद से रिलेट कर रहे हैं? एक ऐसा अभिनेता जिसकी एक इमेज लोगों के जहन में है कि हाँ, अगर आप कुछ गिने चुने ऐसे खौफनाक विलन की बात करते हैं तो प्रशांत नारायणन के कुछ कैरेक्टर्स लोगों के जहन में आते हैं, और उसके बाद ऐसी फिल्में आती हैं. तो एक अभिनेता के तौर पे ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है आपको, एक कैरेक्टर से जो बहुत डीपली लोगों के दिमाग में है और फिर उसमें शिफ्ट कर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, लेकिन
मैं जो भी काम करता हूँ मैं वो अपने घर नहीं ले जाता हूँ. मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ और I go back to my normal this thing. So this is me being extremely normal with you. But I feel that that बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जैसे मनीष बता रहे थे कि it becomes difficult for a lot of small filmmakers to really market the film because we don't stand a chance against all the kind of monies that are pumped in to make it visible to the people and almost forcing people to go and watch it and all that. Here we are like just simply saying that that we have made a very good film. We are very confident about it. You need to trust me that I'm not lying. Otherwise there is no specific thing that one can say about something good about the film or something bad about the film. It is just that I feel that whatever films I have been associated with till now have always been very special films. It's always those films which required me to be a part of that film. Similarly, Chidiakhana also is something which is an extremely special film for me. And there are so many films of mine, like even on YouTube, if you just check, there's the White Elephant. There is romantic comedies are there. There are so many things which I've done, which sometimes I feel sad that that they've not been watched by the right amount of people. So they have some very very notion about it, which is not the right. You should see the German film which I've done, which is a love story. It's called Shadows of Time. So if people actually get to see the kind of things that I've actually, this is almost my 52nd film, Chidiakhana. So you can imagine that and I do all kinds of films. I do Malayalam movies, I do Tamil movies, Bengali, now the Hindi, and I've done British films, Canadian films. So I do a lot of stuff like that, So and they're all very all those kind of films which really need me to be there, So that's how I'm there. And how you enjoyed this character which you have played? It's a beautiful role. It's a really beautiful role, and Manish has written it with so much of rounding off. He's like very good at rounding off characters, and that is what has happened with all the characters in this film. And I'm happy that that because it's a very major role in the film, and it gets its proper justice by the end of it like that. So it is you'll really enjoy watching me in this film. Manish, why do we need such films? एंड मार्केटिंग की ब्रांडिंग की बात कर रहे थे. ऐसी फिल्मों के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग ही लोगों को क्यों चाहिए? वाई इट कांट बी वेरी क्लियर कि इट फिल्म हैज़ अ गुड मैसेज, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, पीपल शुड गेट एंड जस्ट गो आउट एंड वॉच दिस फिल्म. तो वो जो एक सिनेमैटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडियंस की, वो भी वक्त के साथ बढ़नी चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी बदलनी चाहिए. You're asking two questions. One is why a good film also needs marketing, and perhaps why good films should be made. I mean, इतना बड़ा देश है, and we cannot because art represents our times, and we cannot have an art which is all masalified into a very standard mix of things. So we need unique stories to reflect our times, and on the marketing front, it is needed. It just has become a very major part of a film project budget, which is both perhaps unfortunate because the people who are now controlling the industry would be on the marketing side than on the creative side. But that's a complicated thing, and one needs to adjust and parley with that. But it's very important that we make, I think cinema is the greatest art form, and we should reflect our times, and India, this big country, needs a lot of films like this. And are you taking this film to any festivals? Yes, it will do its festival circuit. It will also come on OTT and other platforms, but this film Chidiyakhana is meant for theatres. That's why it was shot, that's how it was conceived, and it was casted with exactly the people I wanted to cast. Some special thing about the film while shooting, कुछ ऐसे incidents जो हुए हों जो आपके लिए एक फिल्म मेकर के तौर पे बहुत यादगार है? बहुत सारे हैं, क्योंकि it was with a number of characters.
एक फॉर एग्जांपल था, वी वेर, or perhaps Prashant Narayanan shooting with Govind Namdev, and I had come to know that they have worked together. So there was a scene where he had to pat his cheek because he is his boss, political goon, and he's Prashant character's Pratap is going against his wishes. So I said कि pat में एक force लाने के लिए, and he slapped him so hard, and we kept rolling, and because of it, or irrespective of it, we didn't. That was a good take, and so that's what I was surprised how hard he went for it, and maybe appreciation for Ritvik Sahore, who is a sort of a sports person, a natural person, but he had to do very difficult football shots, and in about a month's time he was doing things like a reverse bicycle kick, which was made famous by Pele. So I have a lot of VFX, but I had told the team in the beginning that you have to play these sports. Or Prashant Narayanan, who has to shoot a football straight 90-degree into the sky. It nearly disappears into the sky, comes straight back, and he has to hold it under his foot. And so he was able to pull that off, and so on. So beautiful moments as we kept moving. Some such memories which you have with the film? I have lots of memories of training for the football thing with the coach that we had called Akash. So he trained the kids also. I had a separate time for my stuff because I'm not like physically playing like that. But obviously I needed to understand, the kind of gestures and postures and stuff that needed to be communicated to the boys who were playing. I needed to be somebody who has played football in his life, who knows about football and who knows about the tactics and who knows about the strategies that could be involved. So, and at the same time, he's somebody who's a political goon. So it was a lot of and then there is this thing about him having a romantic inkling with Rajeshwari also. So that's what I'm saying. It's all in all a very it's almost like the central part, which is like like an octopus. I've got my my tentacles everywhere. Great. So I really wish that people go and watch out this film, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो आप प्लीज़ ये फिल्म जा कर के देखिए. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और सिर्फ एक सोशल मैसेज की बात नहीं है. ओवरऑल जिस तरह की फिल्म आपको चाहिए कि आप परिवार के साथ भी देखिए, और अगर आप यूँ भी देखते हैं तो वाकई में आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत प्यारा सिनेमा किसे कहते हैं आज के दौर में. बहुत बहुत जी. कल या परसों फिल्म के सॉन्ग्स लॉन्च हो रहे हैं और बहुत अच्छे गीत हैं इसमें. जाते जाते मैं प्रशांत नारायणन को एक गाना कोई गुनगुनाने बोलूँगा. प्रशांत, ये तो मतलब पता ही नहीं था. आपके प्यारे कैरेक्टर्स की तो बात हो गई, ये चीज़ हमको नहीं मालूम. ये ऐसे नहीं चलेगा. प्लीज. एक गाना है which is between me and Rajeshwari and Ritvik, which is I don't know the exact lyrics, but it goes something like, लगता है हम चलते हैं तो रास्ते वही मिलते हैं, पर जिंदगी जहाँ चलती है तो रास्ते वही मिलते हैं. ब्यूटीफुल. तो रास्ते फिर मिलेंगे और हम फिर मिलेंगे फिल्म की सक्सेस शेयर करने के लिए. डेफिनेटली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.